Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the remote EBM. So recently, the Election Commission of India says that it has developed a prototype for a multi-constituency remote electronic voting system which would enable a remote voting by migrant workers. ओके तो ये टोटल सिस्टम बनाया गया है, एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे रिमोट वोटिंग किया जाएगा. सो दिस रिमोट वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन can handle multiple constituencies from a single remote polling booth. So this election commission has invited all recognized nationals and state political parties to demonstrate the functioning of this remote voting machine. So if the pilot is successful, then in the 2024 general elections, voter portability can be fully implemented. Now, what is the problem? See, today we could see that the problems associated with this voting system is that many number of people in our country are basically domestic migrants. Okay, और ये कम से कम 30 करोड़ लोग हैं, ठीक है. So the voter turnout in general elections in 2019 was around 67.4% because ये बाकी जितने भी लोग हैं ये left out थे. So domestic migration is a reason why registered voters do not end up voting. Also, we could see that as per 2011 census, there are nearly 45.36 crore migrants in India, both intra and interstate, and which amounts to approximately 37% of the country's population. So therefore, for a large chunk of the population, its franchise gets denied due to exigencies of work or lack of resources to travel during that period. So this goes directly against the EC's no voter left behind goal. So the proposed solution, that is the remote EVMs, has directly been formed with a committee of officers on domestic migrants. Okay, and they have formed this committee to consider various solutions, be it internet voting, be it proxy voting, be it early voting, and also postal ballots for migrant workers. So all of these ideas were rejected due to reasons such as lack of secrecy of the vote, lack of sanctity of one person, one vote principle, and issues of accessibility for unlettered votes. So therefore, this RVM, which is developed with the assistance of BEL, that is the Bharat Electronics Limited, and also the Electronics Corporation of India Limited, बहुत ज़्यादा important है. So BEL और ECIL दोनों ने मिलके ये RVM तैयार किया है. So therefore, it is based on the currently used EVM system only, but RVMs are standalone non-network systems. What is this standalone system? See, it's an application or software that does not need to be bundled with other software or applications, nor does it require anything else to function. Okay, so therefore, the RVM will be set up in remote locations outside the state under similar conditions as current polling booths. Okay, so therefore, we could see that here the significance of this respective technology is because of this domestic migrants don't have to now travel back to their home to state to vote. Also, it could lead to a social transformation for the migrants. It will help to boost voter turnout and will also help strengthening India's democratic process as voters will be connected with their respective roots. ओके तो ये एक नया सिस्टम अभी आया है. अभी यहाँ पे ओपोजिशन का जो उन लोग का एक ओपोज करने का जो एक सिलसिला है वो अभी शुरू हो गया है. ठीक है, रिसेंटली इवन आईएनसी डायरेक्टली ओपोज्ड सच नंबर ऑफ रेगुलेशंस. तो अभी ये सब पॉलिटिक्स चलता रहेगा. ठीक है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट का ये बहुत एक गुड पॉलिसी है दैट बेसिकली ऑफ द इलेक्शन कमीशन to go for the voting of these people who are basically migrant workers. Okay, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. पेट्रियोटिक सिटीजन्स अलोंग द बॉर्डर विलेज. तो यहाँ पे जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वहां पे यही बात बोला गया है अपना होम मिनिस्टर के द्वारा कि द गवर्नमेंट और दिस यूनियन होम मिनिस्टर even recently said that borders can be permanently secured only when border villages are populated by patriotic citizens who are concerned for the country
asking the border guarding force, that is the BSF or any other CAPF forces, to use the Vibrant Village program for the same. So what is this Vibrant Village program? See, this program basically aims to improve infrastructures in villages along India's border with China. And this infrastructure will be improved in states like Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Arunachal Pradesh. So under the program, residential and tourist centers will also be constructed, and it will also provide for improvement in road connectivity and development of decentralized renewable energy resources. Apart from that, the direct access of Doordarshan and education related channels will also be provided so that they could enhance their livelihood living in the villages. Okay, so therefore the key focus areas is basically livelihood generation, road connectivity, housing, rural infrastructure, renewable energy, television, as well as broadband connections. Okay, so therefore today there is a need for such number of schemes because the program is basically to counter the Chinese model villages, but the name has been carefully chosen so as not to cause any consternation in the neighboring country. So China has established new villages along the LAC in the past few years, particularly across the Arunachal border. While China has been settling new residents in border villages, villages on the Indian side of the frontier have set unprecedented out migration. तो उसी के बेसिस पे आज यहाँ पे हम लोग टोटली यहाँ पे चेंज करने के लिए आज ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इन्हीं के द्वारा अमित शाह के जी के द्वारा यहाँ पे पूरे सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बुला के यहाँ से साथ मीटिंग करके इनको एनहांस करने का जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसको बढ़ाने का यहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है ताकि यहाँ पे we could see that slowly and slowly the vibrant village can be seen to be growing in areas like Himachal Pradesh, Uttarakhand and Arunachal. जिस साइड में ऑलरेडी चाइना यहाँ पे एग्रेशन कर चुका है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. दिल्ली बूस्ट फॉर ग्रीन एनर्जी. तो रिसेंटली द दिल्ली गवर्नमेंट हैज approved its draft solar policy of 2022. So this 2022 policy revises the installed capacity proposed by the 2016 policy from 2000 megawatt to around 6000 megawatt by 2025. Okay, so uske alawa it aims to create a unified single window state portal to provide information about the benefits of solar PV systems, process related guidelines, and also some of the pipelines. Okay, so various incentives will be provided by the Delhi government, like generation based incentives and capital subsidies to increase the demand for solar energy. So the monthly GBI, that is the general based incentives, will be provided for residential, group housing societies and residential welfare associations. Okay, तो यहाँ पे decide किया गया है कि for commercial and industrial consumers, the GBI will be provided for 5 years from the date when the solar power is commissioned. So an early bid GBI of ₹1 per kilowatt hour will be provided for the first time industrial and commercial consumers for the first 200 megawatt solar deployment. तो उसी के बेसिस पे आज यहाँ पे जो दिल्ली के द्वारा एनहांस किया गया है, ठीक है, बिकॉज दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल एंड ऑल्सो वी कुड सी दैट यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है इसको हम लोग को बढ़ा के वी कैन ओनली अचीव द कंट्रीज गोल ऑफ अचीविंग a good number of renewable energy of around 175 gigawatt, that is through renewable energy. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे दिल्ली ने ये वाला जो पॉलिसी है इसको अप्रूव किया है और अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा बहुत तेजी से काम चलती है. ठीक है, तो दैट्स द गोल ऑफ दिस वन, दैट इज द ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी ऑफ 2022 बाय दिल्ली, increasing the capacity from 2000 megawatt to around 6000 megawatt by 2025. Okay, चलो स्टेट परफॉर्मेंस इन आरटीआई रेस्पॉन्सिवनेस. तो स्टेट का यहाँ पे तमिलनाडु ने बहुत गंदा परफॉर्म किया है. ठीक है, तो रिसेंटली वी कुड सी तमिलनाडु रिपोर्ट कार्ड 14, 23 महाराष्ट्र, 48 छत्तीसगढ़, फिर लास्टली वेस्ट बंगाल का आरटीआई सबसे बढ़िया है. ओके, सो अभी तमिलनाडु को यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज डायरेक्टली द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ आरटीआई रिलेटेड डिस्प्यूट्स. सो वी नो व्हाट इज बेसिकली डज आरटीआई. सो आरटीआई दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन. इसका बहुत ज्यादा एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज बेसिकली टू एम्पावर द सिटीजंस, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, टू कंटेन corruption and to enhance people's participation in democratic process. Okay, so what was the reason for adoption of this information act? So the main reason was corruption and scandals,
इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड एक्टिविज्म एंड मॉडर्नाइजेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे आरटीआई लाया गया था हम लोग के यहाँ पे थ्रू दी आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे तमिलनाडु वर्स्ट परफॉर्मिंग है। तो ये जो रैंक्स है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लास्ट पे आते हैं। एडिटोरियल वॉइस टेक्नोलॉजी टू कम्बैट साइबर क्राउड। तो यहाँ पे जो हम लोग का साइबर फ्रॉड्स होते हैं तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा गया है के जयंत मुरली के द्वारा, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिस आइडल विंग ऑफ सीआईडी, ओके, ऑफ तमिलनाडु। ओके, तो यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट द वॉइस टेक्नोलॉजी एज एन आइडेंटिफिकेशन टूल टू द फाइनेंशियल सिस्टम टू कम्बैट साइबर क्राइम। ओके, सो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या बोला गया है? अबाउट द बैंक एंड द साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया आर ऑन राइज टुडे. According to a data by the Reserve Bank of India, frauds have cost the country an estimated rupees 100 crore a day. Okay, 100 करोड़ लॉस जाता है एक दिन में, एंड दिस इज फॉर द लास्ट 7 years. सोच सकते हो कितना फ्रॉड्स में हम लोग का पैसा जा रहा है. So the frauds reported in around 2021-2022 is around 23.69 higher than the previous year. Okay, so 2020-21 में 7,359 केसेस रिपोर्ट किया गया था 2020-21 में, और 2021-22 में 9,103 केस रिपोर्ट किया गया है. तो सोच सकते हो 23.69% हायर. So the main reasons for the rise in fraud includes greater use of digital payments, telephone banking, and online banking services. So one way to reduce losses is by adopting voice technology, which encompasses voice biometrics or voice or speech recognition technology. Okay, so यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फायदा है because voice authentication can be significantly improve security over knowledge-based authentication methods. And compared to other biometrics, voice use is the cheapest technology and does not require a reader or special device. So it's a non-invasive, portable, and afford remote identification. And unlike a password, a customer's voice is impossible to spoof or copy and is far more challenging to hack. So this voice technology allows a caller swiftly in seconds, verifies a caller swiftly in seconds by analyzing the caller's voice and flags suspicious calls. So this will allows privacy because it does not require user to reveal personal information. तो आज अगर इसको यूज किया गया, so it will be an excellent tool for the government to disburse money for various schemes and verify the proof of life of pensioners from their respective homes. So in February 2019, HSBC Bank became the first bank to take the revolutionary leap in introducing voice recognition for mobile banking customers. So telephone banking fraud cases fell by around 50% in this time period of 2019. So therefore इन्हीं के द्वारा बोला गया है कि this voice metrics technology is making waves in the world for fraud protection by providing an extra layer of protection of data. So although the technology is not yet perfect, the potential benefits are significant. So once it is in place, user establishment can reap the benefits from a substantial reduction in fraud, making the technology an essential feature in the security toolkit of the future. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बोला गया कि हम लोग अगर वॉइस टेक्नोलॉजी को लेके चले आए तो इन द फ्यूचर टाइम पीरियड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ वॉइस टू बी गेट कॉपीड, टू बी स्पूप्ड, एंड इसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे जितने भी हम लोग का फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन, ओके, वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू से हम लोग इसको बहुत ज्यादा टैकल कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम पीरियड्स. ठीक है, तब हम लोग थोड़ा बहुत जो हम लोग का लॉसेस जाता है उसको हम लोग थोड़ा कम कर सके. ओके, तो इसी के बेसिस पे ये एडिटोरियल था. ओके, सो we have got this 5 number of MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.